हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 7 में ये एक सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की एक आर्टिकल है। इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे इस पर बेस्ड। अब पहले आप इसको समझ लीजिए, स्टेटमेंट है क्या। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस रिवोल्यूशन हुज स्टेटमेंट इज दैट टू फाइंड द CG ऑफ द सरफेस फाउंड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू fx about the x-axis between cut off between the plane x equals to a, x equals to b. ये भी CD PQ MN डेल्टा S लेट AB be an arc of any curve y equals to fx cut off by the planes x equals to a, x equals to b. Consider PQ equals to delta S be an element on the arc AB. Revolution about the revolution of the element PQ about x-axis, it generates a surface of radius y y where P and Q be two neighboring points. Right students? Revolution of element about x-axis, it will generate surface 2 pi by delta S. And let x and y be the coordinate of center gravity, revolution about x-axis lies on x-axis at m, coordinate x coordinate and y coordinate 0, x coordinate equals to x into 2 pi y ds into 2 pi y ds equals to x y ds upon y ds and y coordinate equals to 0. तो इस टाइप से x coordinate y coordinate फाइंड आउट करेंगे और ये इसके बेस्ड, इस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन होगा अब जो आपको कराते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में जो इसी आर्टिकल जो अभी आपको कराया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है टू फाइंड द सेंटर ग्रेविटी ऑफ जोन ऑफ स्फीयर लेट स्फीयर
Suppose the radius of the sphere is a. BC, B dash C dash, O, A, M, N. Suppose BC is an arc which generate a zone of sphere, makes a circle of radius a. Let zone of sphere generated by revolution of arc BC about x-axis makes a circle of radius a. X square plus y square equals to a square. Differentiating with respect to x, 2x 2y dy upon dx equals to 0 or dy upon dx equals to minus x upon y. ds upon dx equals to 1 plus dy upon dx whole square, 1 plus x square upon y square, y square plus x square upon y square और a square upon y square और ds upon dx equals to a upon y. Let OM equals to B, ON equals to C. Zone, center of gravity of zone. Let zone B, C, B dash C dash, B x coordinate y coordinate lies on x axis, x coordinate equals to x y ds upon y ds integration b to c x y ds a upon y ds dx c to b y into a upon y dx, so that a integration x ds upon dx limit goes to c, b to c, integration of x square upon 2 b to c upon x b to c, x coordinate c square minus b square upon 2 c minus b half b plus c. The center of gravity lies between OM and ON, is that half b plus c.